हेले एप्रिल मासर सरथला ठीक अछि आज मे आ जून रो करियो for the May month paid rupees 3000 by cash towards office rent for May month, right? The accounting voucher tomorrow eta ko voucher habo paid करची एटा पेमेंट वाउचर हो payment voucher alt C this under indirect expenses rent के भी तमरो फिक्स न थाए accepted and by cash accepted paid salary by check for May month, right? Salary say paid करची for the May month रे 10,000, right? So all C payment salary expenses under indirect expenses salary भी समस्त फिक्स न थे कार कम थे कार बेसी थे indirect expenses 10,000 check देजी SBI बैंक रा check से देजी and received of rupees 38,000 by check from Autographics for service provided by the firm. तमे मलाइका कंपनी से 35,000 रिसीव कला अमाउंट रिसीव कला तो एटा मोर होची रिवेन्यू माने इनकम तो एटा मोर रिसीट वाउचर एंट्री हबो जेहेतु तमे रिसीव करूचो पैसाटा तो रिसीव वाउचर एंट्री हबो ऑल सी नाटा देली मु कंसल्टिंग रिवेन्यू अंडर इनडायरेक्ट इनकम कारण एटा तमरो इनकम टा सर जो लिखा है कंसल्टिंग रिवेन्यू जो नाटा लिखा है एई नेम टा ही लिखा हबो ना जी हमको पेमेंट करथियो पैसाटा पेमेंट तारी ना भी लिखि पारो या फिर तमे रिवेन्यू ना भी देई पारो कारण जी भी तमरो पेमेंट करछि धर मोर आउ के पार्टी जदी पेमेंट करिवो तो ता पार्टी ना लिखि तो एमिते केतरा लेजर मु तयार करी जेतरा पार्टी पेमेंट मते करसंदी माने मु पैसाटा नउची सेते जाय तो ते गथि तो ऑल टोटल गोटे मु लेजर तयार कर देली कंसल्टिंग रिवेन्यू तो जो पार्टी भी मते पैसा दो मु एइथरे एंट्री करी पार्टी ना लिखिया दरकार नै जदी पार्टी तुमको फुल एंड फाइनल सेटलमेंट जदी करूची पार्टी ना लिखिवा दरकार नै 35,000 by check SBI bank paid rupees 1450 by cash for mobile phone bill charges mobile phone paid करची payment voucher all C mobile phone charges under indirect expenses पेड जेहेतु करूची सेटा ताले एक्सपेंसेस से जाय तो एटा मोर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मोबाइल चार्जेस टा केबे तमे जो वाउचर जो पकोचो तो सदाळे समान पकोचो केतरा कम पकोचो केतरा बेसी भी पकोचो 250 कैश ना चेक कैश Based on invoice amounting of rupees 38,000 for service rendered by the firm, the Sunshine Agency of rupees 20,000 after adjusting of rupees 15,000 was which was received as advance. काली हमें गोटे advance receive करते total amount थिला तमरा 35,000 भितरु receive कलो केते 15,000 advance receive कलो एबे से रेस्ट अमाउंट देला 20,000 तो एबे हमें फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करबा तो केमिति होउची फुल एंड फाइनल सेटलमेंट देखो हमर टोटल इनकम कोन 35,000 35 एबे कैश रे केते रिसीव कलो 20,000 आगुरु एडवांस केते रिसीव करथिलो 15,000 जीरो सेटलमेंट हला एडवांस टा मोर जीरो हला देखो इठी
हला मोर एडवांस 0 हला माने फुल एंड फाइनल सेटलमेंट मोर हे गला जला सेटलमेंट एमिति हुए and paid conveyancing bill for rupees 850 in cash to Ranjit conveyancing bill payment voucher paid करची all see conveyancing bill indirect expenses 850 cash paid rupees 1450 in cash towards electricity charges all see indirect expenses 1450 by cash deposit cash of rupees 10,000 into bank रे deposit कला को voucher हो बैंक रे डिपॉजिट करले कंट्रा voucher contra voucher cash to bank cash 10,000 to bank paid rupees 1250 in cash towards office maintenance paid करची payment voucher all office maintenance indirect expenses 1250 by cash paid 1 lakh by check for the purchase of 2 motor vehicle for official use दीटा motor vehicle तमरा किनिछि से हला तो paid तम हाथुर जाईछि तो motor vehicle अंडर कौन आसीबो गाड़ी फाड़ी कौन अंडर रे जाए फिक्स एसेट गाड़ीटा तमे पर किनिला पर तमे पर पछे बिकी पारिबो माने बिकी पारिबी तो फिक्स एसेट सेटा गाड़ी गोटे जिंस से पे फिक्स एसेट 1 lakh by check देथिबो एसबीआई बैंक the firm utilized the service of Mr. Suresh for the Sunshine Agency contract and paid him a check of rupees 21,000 by constituency charges तमे आउ जनठू सर्विस रिसीव कल माने ताकू तमे एबे ता सर्विस पय ताकू पेड करिवो तो एटा मोर कंस्टिट्यूएंसी चार्जेस रे मोर जीवो ऑल सी चार्जेस अंडर डायरेक्ट एक्सपेंसेस एटा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हबनी तमे सर्विस पाइचो तो जेतिकी सर्विस पाइचो ता पय तमे पेमेंट करिवो तो एटार किछि बार्गेनिंग हुएनी डायरेक्ट एक्सपेंसेस ए पय 21,000 by check SBI bank Mr. San withdraw of rupees 5,000 cash for personal use withdraw कला तो withdraw already ledger तैयारी की अछि कारण सेटा हमरो एप्रिल मास सर्विस withdraw करछि 5,000 by cash हला सला देखिबा बैलेंस मोर
295 असला ठीक असला जोटा कहली कौन मे मसरे तुम 295 आसो जून मसरे 348 आसो सॉरी सर केते डेवलप करछि केन जान छथि डेवलप एटा नै एटा तुम केते बढ़ुछि अमाउंट बढ़ुची नुह एटा तुम ट्रायल बैलेंस रे तुमर आसे कौन कि ऑल अकाउंट रो लिस्ट आसीबो डेबिट बैलेंस केते क्रेडिट बैलेंस आसे एटा आसीबो जदि तुम प्रॉफिट देखिया पय चाहूचो ताले बैलेंस शीट जाओ बैलेंस शीट एटी देखो प्रॉफिट केते अछि देखो 23000 तुम प्रॉफिट रे अछि माने तुम कैपिटल अकाउंट रु 23000 तुम प्रॉफिट रे अछो कैपिटल अकाउंट केते थला 1,50,000 राइट भितरु तमे 23,000 एबे प्रॉफिट रे अछो माने 1,50,000 प्लस 23 तो तुमको तुम कैपिटल अकाउंट जाई साला पर भी तमे 23,000 रो कंपनी तमरो प्रॉफिट रे अछि बुझला तो प्रॉफिट तमरो बैलेंस शीट रु तमरो बाहर बुझला ट्रांजैक्शन नॉर्मल ट्रांजैक्शन बुझलु In this session, we will be learned to record transaction in service organization, classify business organization, define a trading organization and describe its activities, identify the accounting terms associated with trading organization, identify the Tally ERP9's capability for trading organization. इस सेशन में जानिबा सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कौन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रो क्लासिफिकेशन कौन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन कौन से विषय में जानिबा Tally has a report generation capability which makes it popular among the accounting software where voucher enter in Tally are used to prepare companies' book of accounts and financial statement. Generate report which can be used to compare companies' period for the financial year, group and ledger, right? ERP9 रे Tally रे तमरो report generation रो capability बहुत अधिका रिपोर्ट जनरेशन पाई तुमको कौन सी स्पेशल प्रोसेसिंग करबा दरकार है तुमको करेक्ट जगह रे करेक्ट एंट्री कले रिपोर्ट ऑटोमेटिक मोर जनरेट हो बुझला The following figure shows the Tally ERP9 menu for financial report एटा होछ तार फाइनेंशियल रिपोर्ट जोटा कि हमें बैलेंस शीट और ट्रायल बैलेंस जोटा देखथले रिपोर्ट एरिया भीतर एगुडा सब मोर रिपोर्ट अछि रिपोर्ट एरिया भीतर बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड डिस्प्ले अछि डिस्प्ले भीतर तमे ट्रायल बैलेंस अकाउंट बुक पाइबो अकाउंट बुक भीतर कैशबैक बुक लेजर ग्रुप समरी ग्रुप वाउचर जर्नल रजिस्टर डे बुक लिस्ट ऑफ अकाउंट एगुडा सब तमे पाइबो बुझला Balance sheet is a financial statement that indicates the financial health or net worth of a company at any given point. Lists the asset and liabilities of a company. In the Tally ERP9, display the information entered in the default primary group. Right? Balance sheet मोरो कौन balance sheet होची गोटे organization financial statement financial transaction टाकू मते indicate करिया पे balance sheet गोटे दरकार सेहितरे गोटे organization net profit केते आसुची सेटा मु जानि परिबी and balance sheet is a collection of asset liabilities and capital बुझला profit and loss account is a financial statement that describes the operational result of the company or its earning capacity for a given period list the company's income and expenditure in Tally ERP9 display the information entered in the default primary group is updated instantly with every transaction or voucher that is entered and saved does not require special processing. Tally ERP9 रे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी गोटे सेपरेट रिपोर्ट अछि जोथरे कि मु केवल गोटे ऑर्गेनाइजेशन रो
प्रॉफिट केते लॉस केते सेटा मु जानि परिबी एंड टैली ERP9 रे एवरी ट्रांजैक्शन को तुमको सेव करिया दरकार नै से ऑटोमेटिक तमरो सेव हे जी एठी कंट्रोल एस मारिया दरकार नै से ऑटोमेटिक सेव हे जी account book record individual transaction details which you have entered. Day book is a list of transaction for a particular day. Day book रे मु particular day रो केते सब transaction हेची सेटा मु जानि परिबी. List of account display the existing chart of accounts listed as group in alphabetical order. Trading is defined as an exchange of goods for a fixed market price and prescribed value. Trader act as a channel that provide goods produced by the manufacturers and convenient place, price, quantity, and time to the consumer. Trading organization is involved in the process of buying and selling. Trading organization ର କାମ ହେଉଛି କେବଳ କିଣିବା and ବିକିବା. ମାର୍କେଟ ରେ ଯେତେବେଳେ ମୋର ପ୍ରାଇସ୍ ଯେତେବେଳେ ଡିଫର करे ଗୋଟେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ପିଛା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଇସ୍ ଡିଫର करे ସେ ସବୁ ହେଉଛି ମୋର ଟ୍ରେଡିଂ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ର କାମ. ରାଇଟ୍ ଟ୍ରେଡିଂ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ କ'ଣ କରିବ ମାର୍କେଟ ରୁ ପ୍ରାଇସ୍ କଷ୍ଟମର ଡିମାଣ୍ଡ ଟାକୁ କ୍ୟାପଚର କରିବ कस्टमर डिमांड अनुसार मार्केट स्टॉक अवेलेबल करेबो देन से कस्टमर को सेल करे बुझला नेचर ऑफ ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन द एक्चुअल मार्केट प्राइस इज एस्टैब्लिश्ड एंड इज वैलिड फॉर ए शॉर्ट पीरियड बेस्ड ऑन द करंट सप्लाई एंड डिमांड द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट इज डिटरमाइंड बाय द कस्टमर्स एक्सपेक्टेशन ऑफ क्वालिटी एंड कन्वीनियंसी in relation to the actual amount paid for it. The trader deals with goods which can be repacked if necessary but does not process them. A trading organization has to continually keep track of market and demand and ensure that the inventory planning is done to take advantage of demand whenever it arises. Different customers may be charged different prices by varying the percentage of discount on the price list. एमिति नुह जे कस्टमर सब आसीबे गोटी प्राइस को तुमको देगी जी कस्टमर रो सेगमेंटेशन कोन कि बार्गेनिंग करबा तो डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर पाइन डिफरेंट डिफरेंट प्राइस से माने फिक्स करी रखंदी से अनुसार कस्टमर को सेल करो. The process of transforming raw material into finished goods for consumers or for further processing by others in the channel is called manufactures. Manufacturing organization can be classified according to the popular production process they undertake. Consider the following factor to define its style of functioning. Produce goods and stock them for sales. Produce goods against customer orders. Keep sub-component at a strategic location. On assembly the final product and deliver it to the customer in time. Right? Manufacturer organization जो थे मोर रॉ मटेरियल मोर सप्लाई हुए रॉ मटेरियल को नहीं कि मत प्रोडक्शन प्रोडक्ट हमर प्रोडक्शन हुए सीधा कहजे मैन्युफैक्चरर ऑर्गेनाइजेशन. नेचर ऑफ मैन्युफैक्चरर ऑर्गेनाइजेशन the production cycle and market cycle need not match. Usually the entire cycle of procurement or production distribution and realization is longer as compared to the other types of organization. Scientific methods can be used to reduce the production cost which form a major part of the total cost of the product. Trader can be classified as wholesaler and retailer, right? देखो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन कौन करिवो कस्टमर डिमांड टा को कलेक्शन कर रखिवो जो हिसाब रे तार डिमांड टा कलेक्शन होला से हिसाब रे से इन्वेंटरी जनरेट करिवो इन्वेंटरी जनरेट करला पर स्टॉक अवेलेबल करेबो स्टॉक अवेलेबल करला पर सेल करिवो काहा को सेही कस्टमर बुझला. डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड सर्विस ऑर्गेनाइजेशन. ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन सेल्स ऑफ गुड्स सर्विस ऑर्गेनाइजेशन सेल्स ऑफ सर्विस. Trading organization maintains inventory. Service organization does not have inventory. Trading organization cost for trading organization is the cost of goods sold. Service organization cost for service organization is the cost of providing service. Trading organization goods are tangible. Service organization service are intangible. Hello? The activities in trading organization are purchase and sales. Purchase include buying goods in exchange for a monetary value primarily with the intention of selling them to customer. Sales involved transfer for goods or services for money are reported in financial statement net of trade account. Credit and credit period. Credit is an
agreement whereby a supplier agrees to a defer payment for goods and service. Credit रे आनुछ माने धार रे आनुछ. क्रेडिट पीरियड कोन जोटा धार रे आनलो ताकू गोटे टाइम फ्रेम देलो जे मते मु तुमको मासे पर रिटर्न कर देबी किबा 2 मास पर रिटर्न कर देबी. एटा होछ क्रेडिट पीरियड तुम टाइम पीरियड दोछ. Is a time frame for which the supplier agrees to provide the customer with credit. Some of the factors that help in deciding the credit period are the credibility of the buyer, which is based on his own financial stability and the relationship with the seller, overall profitability from the repeated order by the buyer, the product profit margin, the credit period offered by the competitor. Trade discount is a discount allowed on the list price of commodity, is offered to allow for customer segmentation, represent the position of the buyer. Cash discount is a discount allowed as an inducement or incentive to the customer for promote payment, is not deducted from sales revenue, is recognized separately, right? Cash discount कौन जेतले तुम जाउछ हला परिबा किनिया पे जाउछ धर तू आलू किनिया पे गलु राइट आलू किलेटा आनिबु से पूरा फिक्स प्राइस नबो जदि तू कहबु नाही मते आलू बस्ताटे दे हैला तो जेतिकी आलू रेट थिबो से निश्चय कैश किछि डिस्काउंट करिवो कारण तुम पूरा बंच करिक नउछ हैला दैट इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट. Return allowance. Return are the total value of the merchandise returned by a customer for refund or credit. Allowance is a concession granted to customer for unsatisfactory goods or services. Return and allowance goods may be returned due to any of the following reason: quantity related issue, quality related issue, payment item and delivery related issue. यही सकाशे तमर रिटर्न टा हुई हला. सर अलाउंस allowance माने compensation. धर मु तुमको कहली तुम गोटे लैपटॉप मोठू नेल से लैपटॉप टा खराब हैला तो मु तुमको अलाउनेंस देबी कारण मोर फॉल्ट हैला सेटा मु तुमको खराब जिंसरा देछि तो मु तुमको आइदर तुम कैश रिटर्न कर परिबी या फिर ता बदले रे आ गोटे लैपटॉप दे परिबी. बुझला. Cost of goods available for sale is the cost of goods that a business could have sold in a period, represent the sum of opening stock and purchase in a period. The equation for cost of goods available for sales is cost of goods available for sales equal to opening stock plus purchase minus purchase return and allowance. ये फॉर्मूला मन रखियो. Cost of goods sold represent the direct cost incurred by a business in the process of selling goods, consists of all the costs that associated with the goods that were sold during a specified accounting period, including material, labor and overhead. The equation for cost of goods sold equal to opening stock plus purchase minus purchase and return allowance minus closing stock. Gross profit is the profit earned out of the core activity of buying and selling. The equation for gross profit is gross operating revenue minus cost of goods sold into 100 divided by gross operating revenue. Right? ये equation गुड़ा मन रखियो. Tally रे सब use नहीं, but मन रखिया को पड़िबो. कारण तुमको केतले रिपोर्ट जेता मागिबे ए सब एक्सेल शीट रे ए सब फार्मूला पकेगी तमे बाहर करिवो. Operating expenses are periodic expenses incurred in the course of running a business, cover all expenses related to the ongoing operation of a company, including sales, marketing, and administrative expenses. Operating profit, profit before interest and tax, is the net income before income tax expenses and interest expenses. Is a popular measure for comparing the earning power of the companies. नेट प्रॉफिट सब तक माइनस कला पर जो जिनसटा रहिबो जो अमाउंट रहिबो सेटा होची नेट प्रॉफिट. ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस इंटरेस्ट एक्सपेंसेस माइनस इनकम टैक्स एक्सपेंसेस. Prepare and printing invoice balance sheet can be viewed at any given point of time. Profit and loss account can be prepared for any period. Stock valuation under multiple method can be viewed and their effect on profit and can be estimated. Stock detail can be maintained location wise. Pending order can be tracked.
an account of pending invoice can be followed up. Slow moving and fast moving item can be identified and necessary remedial action can be taken. Stock can be identified batch wise. Expiry date for inventory items can be ascended. Using stock group and category alternative product can be made available. Interest can be charged on payment pending beyond due date. Physical stock can be reconciled with stock record. Different price list can be maintained for different customer segments. Volume based discount and trade discount can be to different customer segments. Credit period and credit limit can be recorded. Credit period availed from supplier can be recorded. Free sample and replacement stock can be accommodated. ହେଲା ଖାଲି stock पढ़िबा ହେଲା okay thank you.